Good morning, everyone. Welcome to the official YouTube channel of our 24/7 regulatory bodies and SO. My name is Amanjyot, and I am here with all of you to discuss the another session on LiveMint newspaper analysis. So, first of all, before starting the session, a very good morning to all of you. And let's just start a session. Session start करने से पहले those candidates who are live in the session, do let me know that audio and video both are okay. Are we good to go? Just give me a thumbs up in the comment section so that I will be knowing that everything is okay and I will continue the session. So, chali, let's just start the session. First of all, if you have not downloaded the 24/7 application yet, then do download the application. And also, if you have not subscribed the channel 24/7 Regulatory Bodies and SO, then do subscribe the channel and press the bell icon so that all the upcoming sessions notification will be given to you. Okay. Good morning, Arias. Good morning, Amisha. Let me know everything is okay. Okay, all okay. We are good to go. चलिए start करते हैं. So this is 26th of October जहाँ पे हमें discuss करना है news को. So the first news for today is that aims Delhi to go paperless to start e-hospital implementation from the next year. So that's a very good step towards the electronic services, or we can say online services, which is AIMS is going to provide, but AIMS Delhi is going to start this. So AIM Delhi is to go paperless to start a e-hospital implementation for the next year. This is what we are discussing. So with AIMS Delhi going paperless, the staggering of slots will be implemented at all levels for crowd management in a new OPD appointments. Okay, now this is going to help in the crowd management in the new OPD appointments. It's obvious when we are talking about that people have to stay in the queue to take their numbers. And अगर हम एम्स की बात करें तो situation is like that, people have to go from night की रात को 12 बजे से लोग लाइन में लगे होते हैं, then they get morning number और जाके वो अपने आप का अपॉइंटमेंट ले पाते हैं with the doctors. So this creates a very lot of issues for the crowd and for the management of the hospital also. तो यहाँ पे सभी लेवल पे क्राउड मैनेजमेंट में हेल्प करेगा आपको टू टेकिंग द अपॉइंटमेंट्स. ठीक है, चलिए आगे देखो क्या है. एम्स दिल्ली गो पेपरलेस फ्रॉम 1st of January 2023. एम्स दिल्ली डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास हैज ऑल द डिपार्टमेंट्स इंपॉर्टेंट डेट हुआ है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कवर. इंपॉर्टेंट है आपका. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1st January 2023 से ही पेपरलेस होगा. और साथ ही में एम्स दिल्ली जो है आपके डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास, इन्होंने इशू किया है एक ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम सभी हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट को, चीफ ऑफ सेंटर्स को एंड आईटी टेलीमेडिसिन ओपीडी और नोडल ऑफिसर्स को. ठीक है, इन सभी के नोडल ऑफिसर्स को, दैट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल मॉड्यूल्स ऑफ ई. Okay, good morning, Sunil. So the news is that recently National Informatics Center team present कर चुका है list of modules को, functional है at AIMS and demonstrated various modules. ठीक है, बहुत सारे modules के बारे में बताया है that all the department has to start this modules, all the department have to implement this module. This has been set. ठीक है, साथ ही में आगे बढ़ते हैं और next it is saying that in the Delhi University area, the Pusha the AQI. The implementation includes an oversight monitoring committee and working committee will be constituted for implementation of all modules of e-hospital. It has said. यहाँ पे क्या कहा गया कि इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड करेगा एक ओवरसाइट मॉनिटरिंग कमेटी का एंड वर्किंग कमेटी होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूट करवाएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल मॉड्यूल्स ऑफ ई हॉस्पिटल. नाउ अ वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट इन अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट which present percent work done will be submitted by the NIC team. वी हैव सिंपली सेड कि यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड कर रहा है आपके ओवरसाइट मॉनिटरिंग को, कमेटी होगा, वर्किंग कमेटी होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द मॉड्यूल्स ऑफ ई हॉस्पिटल. और साथ में आपका वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है इन अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट विथ परसेंट वर्क दिया जाएगा, सबमिट किया जाएगा एनआईसी टीम को, लाइक हाउ मच परसेंटेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हैज़ बीन डन बाय द टीम. ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी एंड एनआईसी को दिया जाएगा बाय द वर्किंग कमेटी एंड एज वेल एज योर मॉनिटरिंग कमेटी, जो कि दोनों बनाई जा रही है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ई हॉस्पिटल मॉड्यूल्स. साथ ही में नोडल आईटी ऑफिसर्स विल बी नॉमिनेटेड बाय ऑल द डिपार्टमेंट सेंटर्स सेक्शंस फॉर कोऑर्डिनेशन विद एनआईसी एंड कंप्यूटर फैसिलिटी इटसेल्फ. और साथ में जितने भी आपके नोडल आईटी ऑफिसर्स हैं ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स और सेंटर्स और सेक्शन, दे विल कोऑर्डिनेट विद द एनआईसी टीम. ओके, next is with AIMS Delhi going paperless, the staggering of slot will be implemented
at all levels for crowd management in a new OPD appointment, it has said. साथ ही में automated email to be sent to the concerned doctors for their next day appointments, कि like next day पे किस डॉक्टर का क्या अपॉइंटमेंट है, how many appointments they have, everything will be delivered to you in the form of email. Now, Ayushman Bharat Digital Mission will be mandatory for all patients coming to new Rajkumari Amrit Kaur OPD of AIMS. So first of all, do let me know, आयुष्मान भारत हम सबने सुना है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. Now let me know how many components of आयुष्मान भारत is there. कितने components हैं आपके आयुष्मान भारत के, जल्दी से बता दीजिए. साथ ही में यहाँ पे कहा गया है कि आयुष्मान डिजिटल भारत डिजिटल मिशन जो है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द पेशेंट जो भी आ रहे हैं, किसके लिए, आपके अपॉइंटमेंट्स के लिए एम्स में, दे नीड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. साथ ही में ओपीडी अपॉइंटमेंट्स विल बी डॉक्टर लाइक फैकल्टी सीनियर रेसिडेंट स्पेसिफिक. द सिस्टम वुड हैव अरेंजमेंट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन इन केसेस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी लीव एक्सेट्रा. डैशबोर्ड शुड बी अवेलेबल फॉर द ओपीडी स्टैटिस्टिक्स. व्हाट वी आर सेइंग कि ओपीडी अपॉइंटमेंट जो है डॉक्टर के फैकल्टी सीनियर रेसिडेंट स्पेसिफिक होंगे कि किस पर्टिकुलर ओपीडी में किस पर्टिकुलर डॉक्टर को अभी रीशेड्यूल किया गया है, शेड्यूल दिया गया है. और सिस्टम जो है वो अरेंजमेंट भी करेगा रीडिस्ट्रीब्यूशन के केसेस में, लाइक इफ देयर इज अ पर्टिकुलर डॉक्टर हु इज अनअवेलेबल, सेकेंड द पर्सन डॉक्टर इज ऑन द लीव, सो this will help to redistribute the cases of the doctors to the another cases to another doctor, so that every customer, every patient will have the service of the hospital. कि अगर कोई आपका लीव पर है या अवेलेबल नहीं है तो उनके केसेस किसी दूसरे डॉक्टर्स को क्या किए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे. और जो आपका डैशबोर्ड है दैट विल बी अवेलेबल फॉर द ओपीटी स्टैटिस्टिक्स. Okay. Now 10 to 12 barcodes for sample for a common panel of test may be printed at the time of admission registration and included with the admission sheet the hospital said. 10 से 12 बारकोड्स ऐसे होंगे फॉर सैम्पल फॉर अ कॉमन पैनल आपके ऑफ टेस्ट के लिए बनाए जाएंगे, प्रिंट किए जाएंगे, है ना, एट द टाइम ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन जब आप करवा रहे हो. और ये इंक्लूड करेगा विद द एडमिशन शीट. किसको इंक्लूड करेगा, ये एडमिशन शीट ऑफ द पेशेंट को इंक्लूड करेगा. तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. एम्स को क्या हम बनाने वाले हैं, आपका पेपरलेस. दिल्ली एम्स इज गोइंग टू बी पेपरलेस from 1st January 2023. Very good. There are two components of Ayushman Bharat. First is Health and Wellness Center and second is Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. You should remember all these things. जब भी किसी न्यूज़ या किसी टर्म के बारे में पढ़ते हो तो उसी टाइम पे उसको रिवाइज कर लो, so that you will be able to recognize each and every detail of the news. तो आयुष्मान भारत को नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 जब हमने बनाया था तब हमने बात किया था हमें यूनिवर्सल कवरेज हेल्थ देना है टू दी पीपल. लाइक हमारी कंट्री के जो हेल्थ सेक्टर है, मेडिकल केयर है, दीज आर राइट नाउ सेगमेंटेड एंड सेक्टोरल अप्रोच. ये सेगमेंटेड और सेक्टोरल अप्रोच में चल रहा है, बट वी वांटेड इट टू कन्वर्ट इनटू अ यूनिवर्सल कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज. यानी कि क्या हो गया, यूनिवर्सल कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हम क्यों लेकर आ रहे हैं, वी वांट ईच एंड एवरी पर्सन टू बी लिंक्ड विद दी हेल्थ केयर बेनिफिट्स, मेडिकल केयर बेनिफिट्स. उसी के लिए हमने किसको इंट्रोड्यूस किया, आयुष्मान भारत, जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज विल बी अवेलेबल इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर. secondary and tertiary healthcare services will be available under Jan Arogya Yojana. Okay, so do remember the detail of the scheme, and it's a very important scheme also. Chaliye, so there is one shining star, Mr. Harsh Goenka, on Indian economic growth. So what we are talking, Mr. Harsh Goenka, he is the growth of Indian economy. It has said. Now who is he और इन्होंने कैसे economic growth को हेल किया है, देखते हैं. So data shows that the China's economic growth forecast is standard 3.2%, US is 2.6%, Brazil is 2.8%, South Africa is 2.1%, Europe area is 3.1% for financial year 2022. For the financial year 23, India stands at the first position in terms of IMF forecast about the economic growth, that is 6.1%. तो डेटा ने शो किया है कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को हमने फोरकास्ट किया, या यूएस या ब्राज़ील या साउथ अफ्रीका या यूरोप की हमने जब स्टडी किया, तो वी हैव फाउंड दिस स्टैटिस, वी हैव फाउंड दीज नंबर्स. ठीक है, बट इकोनॉमिक ग्रोथ जब आईएमएफ ने फोकस की इंडिया की, तो इंडिया स्टैंड्स एट द फर्स्ट पोजीशन विद द फोरकास्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज 6.1%, जो आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमें करके दिया है. ठीक है. नाउ आरपीजी एंटरप्राइज चेयरमैन मिस्टर हर्ष गोयंका hailing the growth of Indian economy on Tuesday, said there is one shining star that has steadily been rising up the ranks.
while the world grapples with inflation, political instability, energy crisis, currency collapse. तो इन्होंने कहा कि आरपीजी एंटरप्राइज के चेयरमैन जो है मिस्टर हर्ष गोयनका, ये इकलौते ऐसे पर्सन है, और वी कैन से ही इज दी वन शाइनिंग स्टार जो स्टेडिली राइज अप करते जा रहे हैं अपनी रैंक को। वेदर अगर हम बात करें तो वर्ल्ड आपका ग्रैपल कर रहा है विद इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत है कंट्री में, एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है, करेंसी कोलैप्स हो रहा है, बट this is the person who is steadily rising up the ranks. Okay, how it is possible? So taking to data, Goenka posted a data showing IMF forecast on economic growth of different countries. According to the data, India's economic growth is stand at 6.8% for financial 2022, जो कि कम किया गया है 7.4% से, है ना, the highest as compared to the other developed nation. Now you can see China, US, Brazil, Africa, Europe, कितना difference है. India is standing at the 6.8% forecast for the current fiscal year, क्योंकि पहले 7.4 था, कम करके हम 6.8 पे लेकर आए हैं. Now this has been shared by the Mr. Harsh. So the data shows that the China's economic growth, this is the, we have already discussed कि this is the growth, and India is at the 6.8 for the financial 2022. As per IMF forecast, US economic growth for financial 23 stands at 1%, China at 4.4%, Brazil at 1%, South Africa at 1.1, Euro is 0.5. And India के लिए जो कहा गया, that is economic growth will be of 6.1% for the next fiscal year. So while the world power gappers in inflation etc., that is steadily rising, India rising, health Harsh Concrete. Okay, he has put a certain status on the Twitter. So this is what it has said, that the वर्ल्ड जो है इन्फ्लेशन फेस कर रहा है, आपका करेंसी जो है कोलैप्स हो रहा है, ठीक है, अ लॉट ऑफ इश्यूज वी आर फेसिंग, एनर्जी प्राइसेस आपके बढ़ रहे हैं, फूड प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, so these are the issues which are going on in the country, but India is the shining star which is already steadily rising in the economy right now, 6.1%, and in the next year we are expecting 6.8% growth of the India. So this is what his tweet has said, that while the world powers grapple with inflation, political instability, energy crisis, currency collapse, there is only one shining star, that is India. So India is rising. He has shared the data of the India and with the developed nations by showing that how India is growing in the IMF's data. Okay. Now India's forex store dips faster than peach. So forex is simply foreign exchange reserves. नाउ इंडियाज फॉरेक्स जो है वो स्टोर जो है, फॉरेक्स स्टोर जो है वो डिप कर रहा है फास्टर देन इट्स पीक. So it means decline of forex reserve cannot be solely attributed to a central bank's move to defend the currency. ये decline जो हो रहा है आपके forex reserve का, you can't solely attribute towards a central bank that this is the reason because RBI went to defend the currency इसलिए ये सब हो गया. You can't say that. You buy an umbrella to use it when it rains. So Reserve Bank of India Governor Mr. Shaktikanta said earlier this year in connection with using forex reserve to defend the rupee against the dollar. Until the beginning of this year, the country had saved enough for the rainy days because of the strong capital flows in the past. However, those reserves are depleting fast. India lost nearly $85 billion of its forex reserve in the first half of the fiscal year, the second biggest depletion among the major emerging economy peaks during the period. So it is obvious that we know that we all save some money for the rainy days. है ना, हम क्या कर रहे हैं, that we all know we save some money for our rainy days. Rainy days here belongs not to the season. It's a kind of the thing which defends like when you are in the trouble, when you are in the issue. So you can use that money. So everybody is saving for the rainy days. So that was Mr. Shaktikanta Das. I also said कि हम भी रिजर्व मेंटेन करके चल रहे थे फॉर द रेनी डेज. एनफ फॉरेक्स रिजर्व थे हमारे पास फॉर द रेनी डेज, बट नाउ इंडिया का जो फॉरेक्स है वो बहुत तेजी से गिर रहा है, और फर्स्ट हाफ में 85 बिलियन का फॉरेक्स जो है आपका लॉस कर चुके हैं हम. एंड अगेन आगे भी जाके देखा जा रहा है कि मे बी चांसेस और तेजी से हो. बिगेस्ट डिप्लेशन अमंग मेजर एमर्जिंग डाउन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ $642.4 बिलियन लास्ट ईयर. ओके, लाइक इतना कम, इतना ज़्यादा कमी आपको देखनी पड़ रही है फॉरेक्स रिजर्व के अंदर. So the rupee has crashed more than 10% against the US dollar this year, slipped below 83%, 83. Okay, so we know that what is depreciation of currency. Depreciation of currency is very simple.
when due to demand and supply of your currency in international market, जब आपकी करेंसी की वैल्यू गिरती है इन इंटरनेशनल मार्केट, सो व्हाट वी आर सेइंग, depreciation is simply when the demand and supply of your currency in international market is less in comparison to other currency, that will be creating a your depreciation. यानी कि depreciation जो है it depends on the market forces. market forces क्या है? demand and supply. अगर रुपये की डिमांड नहीं है, रुपये की सप्लाई अवेलेबल है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट रुपये की वैल्यू जो है वो कम होगा, ठीक है। एंड इफ द डॉलर की डिमांड ज़्यादा है और डॉलर की सप्लाई अवेलेबल नहीं है, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस डॉलर इज गोइंग टू बी हाई। जैसे कि हम इन्फ्लेशन में ही पढ़ते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हो पर सप्लाई ना हो तो प्राइजेस गिर जाते हैं, सॉरी डिमांड हो पर सप्लाई ना हो तो प्राइजेस बढ़ जाते हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ना हो पर सप्लाई अवेलेबल हो तो आपके प्राइजेस गिर जाते हैं। सेम हैपन विद द डेप्रिशिएशन ऑफ द करेंसी या फिर एप्रिशिएशन ऑफ करेंसी। So here, because of the demand and supply, if the value of home currency decrease in comparison to other currency, that is known as depreciation of currency. And because of the demand and supply of a currency in international market, the value of currency increases in comparison to other currencies, that is known as appreciation. तो डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है एंड रुपी आपका क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट हो रहा है, और 10% तक का डेप्रिशिएशन हम देख चुके हैं, एंड रुपीज टेंड टू 83 rupees per dollar. That's the first time last week it happened. Okay, now the depreciation of currency may have cost India the most among the major emerging economies or major emerging markets peer in terms of forex reserve depletion, next only to China, which saw a reduction of $159 billion in its reserve between 1st April to 30 September. And India is followed by the Russia with a decline of nearly $64 billion. So we have seen कि इंडिया को कितना लॉस हो चुका है। We have seen यहाँ पे कि इंडिया जो है वो आपका लॉस दे चुका है, $528 बिलियन पे हम आ चुके हैं। और जो डिक्रीमेंट हमने देखा है इंडियन करेंसी में, वो सबसे ज़्यादा देखा गया कहाँ पे? चाइना में। ओके, एंड चाइना फेस $159 बिलियन, इंडिया फेस $85 बिलियन। इंडिया का क्या था? आपका $85 बिलियन का रिडक्शन हुआ है इन इंडिया। एंड आफ्टर इंडिया एट द थर्ड रैंक देयर इज अ रशिया दैट इज $64 बिलियन। तो ये तीन कंट्रीज ऐसी हैं जो टॉप 3 में आ रही हैं व्हेन देयर फॉरेक्स रिजर्व हैज़ बिन डिक्लाइनिंग। So in percentage term, Thailand lost 18.3%, India lost 13.8%, Russia lost 10.5%. 10 countries that are part of Mint's monthly emerging market tracker were part of the analysis. साथ ही में Japan has also seen its forex reserve decline more than $150 billion this year, and Singapore has seen a decline of more than $150 billion since February. So not only India, almost all countries are facing डिक्रीज इन द फॉरेक्स रिजर्व। सभी कंट्रीज जो हैं फॉरेक्स रिजर्व में लॉस फेस कर रही हैं, बट द प्रॉब्लम इज इंडिया विल नॉट हैव, इफ इंडिया विल नॉट हैव अ sufficient forex for the rainy season, now we have to borrow money, and that will create the fiscal deficit on the government again. तो आपका burden क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा. So that's a kind of worrisome situation for all of us. No, it's not good. See, if you talk about ना, like economic growth is rising. Economic growth आपका 6.8% है. Okay, very good question आदित्य. And inflation is at your 7.4%, 41% आपका चल रहा है, ठीक है? Above 7% है. Now, is it good? देखो जब हमने आपको लोगों को क्लास में inflation पढ़ाया था, तो I have told you inflation's effect might be positive और negative. मैंने दोनों चीज़ें आपको बताई थी कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव कब होगा? जब मनी सप्लाई आपका बढ़ रहा है, पीपल आर डिमांडिंग मोर गुड्स एंड इक्वलेंट आप सप्लाई बढ़ा रहे हो, तो आपके प्राइजेस तो बढ़ते हैं, पर प्राइजेस से ज़्यादा आप प्रोडक्शन बढ़ा देते हो। तो इन दैट सिचुएशन प्रोडक्शन आपका बढ़ जाता है, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंपैरिजन टू प्राइस राइजेस ज़्यादा होता है, एंड दैट क्रिएट अ पॉजिटिव साइन कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है प्राइजेस से ज़्यादा हो रहा है, दैट्स अ पॉजिटिव साइन। नेगेटिव कब होगा? व्हेन द मनी इज इंक्रीजिंग, पीपल आर इंक्रीजिंग डिमांड, पर इक्वलेंट में सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ तो रहा है पर इक्वल नहीं कर पा रहे डिमांड की रिक्वायरमेंट्स को। इन दैट सिचुएशन आपका प्रोडक्शन बढ़ता तो है, पर प्रोडक्शन से ज़्यादा प्राइजेस बढ़ जाते हैं। प्रोडक्शन से ज़्यादा क्या बढ़ जाते हैं? प्राइजेस। तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रहा है और प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं, पर ज़्यादा इम्पैक्ट किसका है? प्राइजेस का है। तो इट विल क्रिएट 8%। ओके, 6.8%। और अभी आपका इन्फ्लेशन सितंबर में चल रहा है 7.41%। ओके, सो यू कैन सी ऑब्वियसली कि आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा है,
प्राइजेस ज़्यादा है, ग्रोथ एस्टिमेट आपके कम है, और आने वाली ड्यूरेशन में भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ ठीक है 6% के अंदर तो हम नहीं ला पाएंगे इन्फ्लेशन को. So when the inflation is more, it means prices are rising more. It means it is creating the overall impact on the economy negative. ठीक है, आपका overall impact on the economy क्या हो जाएगा, negative हो गया. Now clear आदित्य and rest of the other people. So this is why we can say कि ठीक है economic growth आपका अच्छा क्यों बताया जा रहा है. In comparison to other countries economic growth इंडिया की अच्छी है, but अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो it's creating a negative impact. It's not a good thing for our country. Okay, चलिए. So about a third of the decline in forex exchange reserve in India is because of the intervention in forex market to cushion the speed of the rupee fall, said Prasenjit K. Basu sir, chief economist ICICI Securities. Okay. तो आरबीआई ने एक गलती करी थी, तो एवरीबडी इज नाउ बिहाइंड द आरबीआई कि आरबीआई ने जो करेंसी की वैल्यू को बचाने के लिए किया था, दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच हमारे फॉरेक्स रिजर्व और कब हो रहे हैं. नाउ India has kept the nominal effective exchange rate relatively stable, allowing depreciation of about 1% in the past year. This is a prudent, predictable policy, he said. Now, NEER, I have told you there are two types of exchange rate, that is NEER and REER, nominal effective exchange rate and real effective exchange rate. So it is saying कि इंडिया ने क्या किया है, आपका नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रिलेटिवली स्टेबल रहेगा, है ना, एंड अलाउ किया है डेप्रिशिएशन ऑफ अबाउट 1% फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर. ओके, तो ऑब्वियसली ना नॉमिनल इज द एक्चुअल वैल्यू जो आपका चल रहा है. यू डोंट क्रिएट द इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन, बट यहाँ पे 1% ऑफ द लास्ट पास्ट ईयर इन्फ्लेशन को एक्ट किया जा रहा है ताकि हम आसानी से एक्सचेंज रेट के बारे में कैलकुलेशन कर सकें. ओके, दिस हैज़ बिन डन. Now the next news is related to IPO. So Utkarsh Small Finance Bank gets SEBI note for 500 crore initial public offering. तो आपका जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, दैट इज उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आपका आईपीओ निकालने जा रहा है 500 करोड़ का आईपीओ, दैट इज अलाउड बाय द सेबी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाने के लिए कौन सी कमिटी आई थी, विच कमिटी हैज रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ ए स्मॉल फाइनेंस बैंक. कौन सी कमिटी ने आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाया था. ठीक है. नाउ IPO is what when an Indian company first time issues shares for the public, that is known as IPO, initial public offering. तो जब भी कोई इंडियन कंपनी या आपकी पहली बार शेयर्स इशू कर रही है इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, फॉरेन मार्केट नहीं जा रहे हो आप, इनकी इंडियन कंपनी इंडिया में ही शेयर्स इशू कर रही है फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ द पब्लिक, दैट इज नोन एज IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो आपका पहली बार अपने शेयर्स इशू करने जा रहा है फॉर द पब्लिक, एंड दैट ऑफ 500 करोड़, दैट इज नोन एज IPO. ठीक है. अच्छा, कैपिटल मार्केट में हम पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो आईपीओ के टाइम पे शेयर्स को परचेस कर लेते हैं, आईपीओ के टाइम पे शेयर्स को परचेस कर लेते हैं, एंड जैसे ही आपकी कंपनी लिस्टेड होती है एंड शेयर्स स्टार्टेड टेकिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, दे सेल द शेयर्स, ये शेयर्स को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं. नाउ ये किस टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द इन्वेस्टर, और अगर यहाँ पे प्राइस डिफरेंस है तो दैट प्राइस डिफरेंस इज नोन एज व्हाट, वो प्राइस डिफरेंस का जो बेनिफिट है उसको क्या कहा जाता है, दोनों जल्दी से आंसर कर दो, और नहीं पता है तो डू राइट दैट वी डोंट नो, सो दैट मैं आपको बताऊं हम आगे बढ़े. दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, दैट इज रिलेटेड टू योर कैपिटल मार्केट, है ना, इंपॉर्टेंट है और कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है, जल्दी से बता दो. वेरी गुड, ओनली अमीशा हैज गिवन द राइट आंसर, दैट इज योर उषा थोराट कमिटी. उषा थोराट कमेटी हम लेकर आए थे किसको बनाने के लिए, आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाने के लिए. डू रिमेंबर द नेम्स ऑफ कमेटी एंड ऑल ऑल्सो, है ना, कमेटी वगैरह के नाम भी याद रखने हैं. वेरी गुड आदित्य, दैट इज आर्बिट्रेज, दैट प्राइस डिफरेंस, दैट बेनिफिट विल बी आर्बिट्रेज. ये जो प्राइस डिफरेंस है ये बेनिफिट आपका आर्बिट्रेज कहलाएगा. नाउ ये इन्वेस्टर्स होते कौन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इन्वेस्टर. कमेटी इज योर उषा थोराट कमेटी, एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक सिंपली आपके ऐसे बैंक्स हैं जो कि मेनली आपके एग्रीकल्चर, रूरल एरिया, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन देते हैं, एंड दे कैन गिव लोन टू इंडिविजुअल अराउंड 10%, और आपके ग्रुप को दे सकते हैं 11% तक का लोन, सॉरी 15% तक का लोन, नॉट मोर देन दैट लोन दे कैन गिव टू द इंडिविजुअल और द ग्रुप. ठीक है. Now the name of the investor, I think you don't know what is the name of the investor.
तो राइट आंसर विल बी स्टैग इन्वेस्टर्स. दीज आर द स्टैग इन्वेस्टर्स जो आईपीओ में शेयर्स को खरीदते हैं और कंपनी के लिस्ट होते ही शेयर्स को बेच देते हैं. एंड द प्राइस डिफरेंस जो यहाँ से मिलता है दैट इज द आर्बिट्रेज जो स्टैग इन्वेस्टर्स उठाते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं आगे. Now, IPO comprises equity share of the face value of rupees 10 each in a complete fresh issue of shares, and the entire proceed will go to the small finance bank. So, market regulator SEBI has given a green signal to the initial public offering to Utkarsh Small Finance Bank. The Varanasi-based small finance bank plans to raise the about 500 crore from the public offer. So, IPO comprises equity shares of the face value. We have seen already. साथ ही में यहाँ पे कहा गया है is a complete fresh issue of shares and entire proceed will go to the small finance bank. Earlier this year, in consultation with its lead manager, the small finance bank slashed IPO size nearly 63%. है ना, कितना percent? 63%. Now, for IPO, companies like ICICI Security and Kotak Mahindra Capital Company are acting as the book running lead managers, while KFin Technologies Limited is registrar of the offer. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईपीओ के लिए आपका आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी जो है दे आर एक्टिंग एज द बुक रनिंग लीड मैनेजर्स ऑफ द आईपीओ. एंड साथ ही में आपका केफिन टेक्नोलॉजीज जो है लिमिटेड इज रजिस्टर्ड टू ऑफ द ऑफर रजिस्ट्रार ऑफ द ऑफर. The small finance bank is promoted by Utkarsh Kaur Invest Limited, which commenced its operation as an NBFC in fiscal 2010. Focuses on providing microfinance to the unserved and underserved segments, particularly in the state of UP, Bihar, according to the CRISIL report stated in its DRHP from financial year 2019 and financial year 2022. So Utkarsh recorded the second fastest AUM growth in this particular year. So that's why the Utkarsh Small Finance Bank is now ready to issue the IPO. So the bank had filed for the draft prospectus at SEBI in July last year. However, the Small Finance Bank received its issue size letter in July this year. So earlier, Small Finance Bank, Utkarsh Small Finance Bank, planned to raise 1,350 crores from IPO, which included a fresh issue of 750 crores and an offer of sale of up to 600 crore, under which promoter Utkarsh Core Invest was supposed to participate. However, as per the received draft, the IPO is now an entire fresh issue of 500 crores. Okay. साथ ही में that being said, the IPO size is slashed by nearly 63% from the previous size of 1,350 crores. So initially, Utkarsh Small Finance Bank जो था, it was going to give you the 1,350 crore IPO size, but now it's slashed to 63%, and now the fresh issue will be of 500 crores. And the fresh issue always comes under the primary market. That is also known as your fresh issue market or new issue market, right? Now, of the total size, 75% of the IPO will be allocated to qualified institutional buyers. इसमें से 75% जो आपका qualified institutional buyers के पास जाएगा, it means qualified institutional placement के through, while 15% will be reserved for non-institutional investor, and the remaining 10% of the size will be allocated to the retail individual investor. So what Utkarsh Small Finance Bank is doing, it is providing qualified institutional placement, it is providing you public issue, and also it is doing the private placement. Everything will be done by in the same situation. Like, what is qualified institutional placement? Where the qualified institutional buyers can purchase the shares only. Now, the public issue where the shares are in the market and anybody can purchase, that is the retail individual investor. तो आपका QIP किया जाएगा 75% का, पब्लिक इशू किया जाएगा 10% का, एंड प्राइवेट प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ प्लेसमेंट इन विच अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल हैज बीन फिक्स कि इन्हीं लोगों के लिए शेयर्स इशू किए जा रहे हैं. So that will be around 15%. So this is how the small finance bank, Utkarsh Small Finance Bank, is going to issue its IPO, initial public offering. Okay. Now, in the quarter ending June 30, 2022, the bank posted a booming growth, that is 443.35% growth in the net profit to 89.49 crore compared to the 16.47 crore in the same period of the previous fiscal. So its total income meanwhile surged by 39.66% to 655.33 crores in June 2002. The quarter as against 469.23 crores during the previous quarter ended June 2021. So now the Utkarsh Small Finance Bank has faced the profit in this particular quarter around 39.66%, and its income
जो इसका इनकम है वो बढ़ चुकी है, कितना हो चुका है 655.33 करोड़ हो चुका है, जो लास्ट ईयर 463.23 करोड़ हुआ करता था। ओके, सो द स्मॉल फाइनेंस बैंक उत्कर्ष गॉट द लाइसेंस। साथ ही में एज ऑफ मार्च 31st स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्रोस लोन पोर्टफोलियो इंक्रीज टू 10,630 करोड़ फ्रॉम 6,660 करोड़ एज ऑफ मार्च 2020. So 20 में it was around 6,600, but now it increases and it reached to the 10,000 crores. Okay, so as of March 2022 compared to the last 2020 year, that is 5,235 crores as of March. So the further as of March 2022, the small finance bank's operations served 22 states through 686 banking outlets, majorly located in rural and semi-urban areas, primarily in the states of Bihar, UP and Jharkhand. Simply we are saying कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है अपने ऑपरेशंस को सर्विस कर रहा है 22 स्टेट्स में थ्रू 686 बैंकिंग आउटलेट, जो मेजरली आपके रूरल एरियाज में, बिकॉज आरबीआई ने जब स्मॉल फाइनेंस बैंक को इंट्रोड्यूस किया था तो आरबीआई हैज सेड दैट 25% ब्रांचेस शुड बी ओपन इन द अनबैंक्ड रूरल एरिया। आपकी 25% ब्रांचेस जो हैं वो अनबैंक्ड रूरल एरिया में ओपन होनी चाहिए। So the majorly located in the rural and semi-urban areas, the primary states in the states of Bihar, UP and Jharkhand, सबसे ज़्यादा branches है किसकी, उत्कर्ष small finance bank की। Okay, so we have seen the information for today. First we have seen कि AIIMS Delhi जो है is going to go paperless. Second we have discussed that there is one shining star which is called by the Mr. Harsh Goenka. He is the RPG Enterprises chairman. He said कि बाकी सभी countries जब very slow growth कर रहे हैं तो India is a shining star. Then we have studied that India का forex store जो है वो dip कर चुका है faster than the peak. Forex reserve आपके गिर रहे हैं. Then we have said कि उत्कर्ष small finance bank को allow कर दिया गया है to issue the 500 crores IPO. Okay. Now these are the books or test series available for all of you and really going to help you all. So we have RBI Grade B book kit for the phase 1 in which quant reasoning English जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, डीआई और पजल क्वेश्चंस अलग से मिलेंगे। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस बुक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट नवंबर नाउ एंड इन द फर्स्ट क्वार्टर वी आर एक्सपेक्टिंग आरबीआई, सो और डिले नहीं करना है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन। आरबीआई के टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है तो आरबीआई की बुक किट अवेलेबल है जहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चंस आरबीआई का होगा, यू कैन एनरोल हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट सेबी के लिए अगर आप प्रिपेयर करें तो सेबी फेज 1 पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के टेस्ट बनाए गए हैं आपके, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर सेबी प्रिपरेशन। टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। सेबी आईटी के लिए जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बुक किट बनाया गया है फेज 1 फेज 2 में पेपर 1 को लेकर, दैट इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। पीएफआरडीए के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो पीएफआरडी में द सिलेबस सेम एज द सेबी, ओनली द पेंशन सेक्टर इज डिफरेंट। सिर्फ और सिर्फ फेज 1 फेज 2 के अंदर जो पेपर 2 है दैट इज आपका सिर्फ और सिर्फ पेंशन सेक्टर अलग है, और उसकी भी ई बुक आपके लिए आ चुकी है, दैट इज पीएफआरडीए एनपीएस 2022-23 कंप्लीट ई बुक। And for NABARD, we have a book kit for the phase 1. To enroll in any of the test series or any of the ebook, you can use a code that is Y343. Okay, you can use a code Y343 and you have to add S in the last and you will get 23% discount on all the test series and ebooks available. ठीक है, साथ ही में इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई तो आरबीआई का बैच स्टार्ट हुआ है 17th अक्टूबर से, एंड इन दिस 31st अक्टूबर ईएसआई के करंट अफेयर्स में स्टार्ट करने वाली हूँ। देन सेबी बैच स्टार्टेड फ्रॉम 29th September, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द पीएफआरडी ऑल्सो, एंड द एसबीआई सीबीओ बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 3rd November. So to enroll in any of the batch, you can use a code Y343. CBO की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, इफ यू वांट टू एनरोल इन द टेस्ट सीरीज ऑफ सीबीओ यू कैन एनरोल देयर ऑल्सो। सीबीओ वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज, दैट ऑल द live batches, all the MAHA packs are going on with the double validity for all of you. If you are using this particular code Y343, you will get 78% discount on all the products as well as the double validity. So bank MAHA pack plus price is 30,000 right now, but you can use a code this and you will get the discount there. Okay, so 78% discount with double validity available. So that's the right time to enroll in the batch so that you will be able to cover your syllabus by the December or January month, so that revision भी आप कर पाओ और आरबीआई को क्वालिफाई कर पाओ। ओके,
नाउ लेट्स एंड द सेशन हियर, मिलते हैं कल दोबारा इसी सेशन में। तो जाने से पहले, इफ़ यू लाइक द सेशन, डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। शेयर द सेशन ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर भी आप लिंक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सभी सेशंस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। ओके, so thank you everyone for joining the session, and take care all. See you.